हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर विमेन यूनिवर्सिटी। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है आदर्श आलिया। हम देख रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की सीरीज, जिसका ये है पार्ट 13। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च। हम टाइप्स ऑफ रिसर्च देख रहे हैं, जिसके मेजर टाइप्स को कंपैरेटिवली हम पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल हो चुका, अप्लाइड फंडामेंटल हो चुका। आज हम देखने जा रहे हैं क्वालिटेटिव गुणात्मक एंड क्वांटिटेटिव, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। दैट इज क्वांटिटेटिव, जिसको क्वांटिफाई किया जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, जिसको न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो, इसके कंटेंट्स हैं रिसर्च टॉपिक्स। ऑलरेडी हम रिसर्च का डेफिनेशन देख चुके हैं, वो मैंने एक और डेफिनेशन यहाँ दे दिया है। मेजर टाइप्स हम देख चुके हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसके कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटेटिव रिसर्च, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों का कंपैरिजन, दोनों के डिफरेंस एंड सर्टेन रिसर्च अप्रोचेस और रिसर्च मेथड्स, कैसे रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं और कैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। तो रिसर्च, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, इट इज द नॉलेज study for defining problems, defining assumptions, hypothesis, suggesting solution, collecting and organizing and analyzing data, informations, making inductions, deductions, and ultimately reaching on conclusions. Then we have, this is the डेफिनेशन वाइज रिसर्च। और रिसर्च के बहुत तरह से क्लासिफिकेशंस हैं, जिनमें आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स को लेकर के या 30 यूजर्स, कंज्यूमर्स को लेकर के स्टडी किया गया है, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव। और यहाँ पे फीलिंग को लेकर के स्टडी किया गया है, आप क्यों फील करते हैं फ्री आइसक्रीम प्रोवाइड कराना, तो दैट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च। Then, so let us see one by one. Quantitative research, जो numerical data के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, फिगर्स एंड फैक्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। इट इज the investigation by gathering quantifiable numerical and computational data, performing statistical, mathematical and computable techniques in form of graphs, tables, percentages निकालते हैं, इकोनोमेट्रिक मेथड्स अप्लाई करके जिस रिसर्च को करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा जिसमें ऑब्टेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्वांटिटेटिव रिसर्च, वेयर एज द क्वालिटेटिव रिसर्च इज एनालाइजिंग द नॉन न्यूमेरिकल डाटा, जिसको हम इसके बाद देखेंगे। Quantitative research is used in natural and social sciences like biology, chemistry, psychology, economics, sociology, marketing, etc. And it involves large sample size to conduct research. Outcome of the result can be used multiple times, that is, it is replicable. इसको फिर से replicate किया जा सकता है दूसरे researches में, अपने या किसी और के. And it is the information obtained as participants face close-ended questions, that is the multiple type of questions in form of questionnaires, polls, surveys के फॉर्म में क्वांटिटेटिव रिसर्च का डाटा कलेक्शन किया जाता है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, हाउ द एवरेज टेम्परेचर चेंज ग्लोबली ओवर द लास्ट सेंचुरी। एक पूरी लास्ट सेंचुरी में एक मेजरेबल क्वांटिफाइबल डाटा दिया गया है कि करीब करीब 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ गया है लास्ट सेंचुरी में ऑन एन एवरेज, और इसके बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो इस तरह के एग्जांपल्स, जिनको हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स में जिनको ऑब्जर्व करते हैं और जिनके कंक्लूजन्स देते हैं, दोज आर द क्वांटिटेटिव रिसर्च। दिस रिसर्च बिल्ड्स और on other researchers existing theories. It is also, जैसा हमने पहले ही बताया कि रिप्लिकेबल है, तो ये दूसरे रिसर्चर्स के थ्योरी से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। डाटा ड्रिवन डिसर्टेशंस हो सकते हैं, थ्योरी ड्रिवन स्टडीज हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन ड्रिवन रिसर्चेस, दे अफेक्ट द क्वांटिटेटिव रिसर्च। एंड इट research primarily aims to test the research hypothesis or answer established research questions. That is, it primarily justified the different paradigms, that is the nazariya of different scientists. And designing can be relationship based, quasi experimental or descriptive. Whereas qualitative में हम देखेंगे कि it is the analytical research, that is this ठीक है, हम क्वालिटेटिव को अभी नहीं देखें, कंफ्यूजन हो जाएंगे। द क्वांटिटेटिव रिसर्च इज डन ऑन अ स्मॉल सैंपल टू मेक जनरलाइजेशन टू अ वाइडर पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन बड़ा होता है, एंड जो स्मॉल सैंपल्स होते हैं, बट स्टिल स्मॉल सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, बट
still it is larger than the qualitative sampling, and it is using probability sampling techniques. It is gathered according to the established research questions using research vehicles as structured ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो ऑलरेडी स्टैब्लिश फैक्ट है, थ्योरी पॉइंट्स हैं, उन्हीं के बेसिस पर, दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, जिसमें कि ऑलरेडी स्टैब्लिश फैक्ट के बेसिस पर ये डाटा कलेक्शन किया जाता है, लाइक द सर्वेज, क्वेश्चनर्स, लैबोरेटरी रिजल्ट्स, लेबोरेटरी बेसिस जो एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरी में किए जाते हैं उनके तरीके ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, उन बेसिस पर ये facts gathered किए जाते हैं. The researcher uses statistical analysis tools and techniques to measure the variables and gather inferential or descriptive data. Whereas analytical data is here it is used. In some cases, the dissertation members, जो committees हैं, that point wise you can go through for your notes. All so many points you can take here. हम pin points देख लेते हैं. It underpins research questions or hypothesis finding to make conclusions. The researcher can provide recommendations for future research and expand or testing existing theories. Outcome can be used for other researchers also. These already we have seen. So these are the quantitative research. Then comes the qualitative research, which can be defined as a method used to investigate when it is necessary to study the range of behavior of a target population. यहाँ पे बिहेवियर को जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, आप और जिसको अंडरस्टैंड करता है रिसर्चर, द रिसर्चर इज द ओनली टूल. जहाँ हमने पहले क्वांटिटेटिव में देखा था कि लेबोरेटरी टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वैराइटीज ऑफ टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स कैन बी यूज्ड देयर इन फॉर्म ऑफ प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स. जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में टारगेट पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है इन रेफरेंस टू सर्टेन इश्यूज और प्रॉब्लम with the view of perceptions and motivations come in form of non-numerical data. Data का numerical form होता है quantitative research में और non-numerical form मिलता है qualitative research में, like text, video, audio to understand the concepts, opinions or experiences to gather in-depth insights into a problem to generate new ideas, characteristics and description for research. So this is the basic difference. Quantitative research के जो result होते हैं वो fact based होते हैं, figure based होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के रिजल्ट्स आपको न्यू आइडियाज, न्यू व्यूज दे सकते हैं, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं रिसर्च के बहुत, बट वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं रिसर्चर जो प्रॉब्लम फाइंडर है उसके अपने व्यूज के हिसाब से, जबकि क्वांटिटेटिव क्वांटिफाइबल डाटाज होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं. द क्वालिटेटिव रिसर्च टेंड टू डीप स्टडी ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल, छोटे ग्रुप्स ऑफ पीपल्स को लेकर के उसके बेसिस पर लार्ज टारगेट पॉपुलेशन पर काम कर सकते हैं. That is the social reality, culture, behavior और experience, ethnographical, cultural behaviors पर बहुत तरह के behavior related facts पर qualitative research किया जाता है. The term suggests qualitative research based on qualitative research method including the participants' observation, focus groups and unstructured interviews. This is important to note. हमने देखा था quantitative में structured interview होते हैं. Qualitative research is very different in nature when compared to quantitative research, as it takes established paths towards the research, where the established path is taken in quantitative research, whereas in qualitative research, the research methods are employed and how the findings are unveiled to the readers. Readers जो सामने जो subject है researcher के, उनकी feelings, उनके involvement, उनके behavior से related होते हैं. It may be conventional methods including phenomenological research, narrative-based research, ground theory research, ethnography, case studies, and autoethnographical methods can be used, which are the conventional method, and it provides detailed information including knowledge about behavior, attitude, aptitude of the participants, presenting information of human side of subjects as opinion, belief, relationship and behavior. ये सारे facts हम बार बार देख रहे हैं कि ये behavior wise, feeling wise जो quality जिसको हम measure नहीं कर सकते हैं, उन पर जो based data है उनको क्वालिटेटिव रिसर्च में किया जाता है. इट इन्वॉल्व्स नेचुरल एनवायरनमेंट. रिसर्चर इज
key instrument involving participants in one-to-one connection, gathering information by direct contact. So this is the qualitative research. इनमें बहुत सारे research designing इनकी कैसे होती है, that is the emergent designing fact. It can be used with the various research models such as critical theory, constructivism, interpretivism. Interpret कैसे कर सकते हैं, choose and research design. So these are the facts. It involves various participant observation, focus group, and unstructured interviews. It incorporates inductive processes, whereas the quantitative research incorporates deductive processes. Now, in the qualitative research analyzes and understands the data through his own eyes. Researcher अपने eyes से analyze करता है, and judgments to identify concepts and themes comprehensively research material. So that can be biased to some extent. But now, what is this bias? Again, go to the terminologies. In terms of research हम bias की बात करते हैं, general speaking नहीं बात कर रहे हैं. The key quality of the qualitative research are transferability, conformability and reliability. क्यों ये ट्रांसफर हो सकते हैं? क्योंकि ये रिसर्चर्स जो इंटरव्यू कलेक्ट कर रहा है, व्यूज लेकर के, फीलिंग्स लेकर के कलेक्ट कर रहा है, वो रिसर्चर जो की टूल है क्वालिटेटिव रिसर्च का, वो खुद भी तो अपने उसके व्यूज होंगे, जजमेंटल हो सकता है वो, और उस बेसिस पर ये फैक्ट्स होंगे. These facts may be the qualitative research presented is a holistic account, overall problem का solution यहाँ पर as a whole it is presented, and it may be interpretive measures like what researcher hears and what he understands. So अब researcher के understanding पे डिपेंड करता है क्वालिटेटिव रिसर्च के जो डाटा कलेक्शंस किया गया है वो. सो अगर हम इनको दोनों को कंपैरेटिवली देखें तो थंब रूल फॉर डिसाइडिंग वेदर द रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी यूज्ड qualitatively or quantitatively is qualitative research if you want to confirm or test something, a theory. अगर established theory या pre-existing experimental principles के आधार पर अगर आप कुछ confirmed result या hypothesis पाना चाहते हैं, then you have to go for quantitative research. And if you want to understand the concepts, thoughts and experiences, then you should go to qualitative research. Then so the examples are given here. You can go through these here. This is the 300 students पे किया गया, large population, and 15 students पे किया गया है. Professors की पढ़ाई या college में study से आप satisfied हैं या नहीं है satisfied हैं. अगर आप figure based facts find out करते हैं तो वो quantitative research हो गया. अगर आप feeling based research करते हैं तो वो qualitative research हो गया. और sometimes in between mixed method approach भी किया जा सकता है, जिसमें आप figure and fact based भी कर सकते हैं और feeling based भी कर सकते हैं. Then analyzing methods क्या क्या होने चाहिए quantitative data में, that are based on numbers, simple math or more advanced statistical analysis is used to discover commonalities or patterns in the data. And these are certain examples are the applicatory methods are the average scores, number of times particular answer was given, correlation or causation between two or more variables, reliability and validity of results. Then qualitative data के लिए आप जो approach करेंगे वो होंगे आपके more difficult to analyze because it consists of text, images, videos. इसको आपको understand करना होगा. Some common approaches include the tracking the occurrence, position and meaning of word or phrases. जो आपके subject जो आपको बता रहे हैं वो आप कैसे उसको समझ रहे हैं, that is the qualitative content analysis, thematic analysis, close examining data to identify the main themes and patterns of the topic which is being observed, and discourse analysis, studying how communication works in social context. जिसमें ethnography आती है, community studies आती हैं, cultural studies आते हैं, tribal studies आते हैं, उनके लिए आपको अपने आप को भी depth में जाना होगा. So that will be the qualitative research. Now the certain more languages for the qualitative versus quantitative researches are here. The differences we will see in tabular form. Now the quantitative research is expressed in numbers and graphs. These things we have already seen. ये आप अपने answers के लिए ले सकते हैं. Now the basic differences between quantitative and qualitative research are presented here. Focusing on test hypothesis and theories, numerical data.
focusing on exploring ideas and formulating a theory or hypothesis based on the understanding. क्या समझा आपने, उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आया वो क्वालिटेटिव रिसर्च है. क्या पाया आपने, उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आया न्यूमेरिकल डाटाबेस, दैट इज द क्वांटिटेटिव रिसर्च. This analysis based analyzed through maths and statistical analysis, analyzed by summarizing, categorizing, and interpreting the results. Mainly expressed in number, graphs, and tables, यहाँ expressed in words. Then quantitative research requires many respondents, large number of sampling यहाँ पे होती है, यहाँ few respondents या few number of sampling होती है. That is, quantitative research is here involves closed or multiple choice ended questions like the short close ended questions, छोटे छोटे questions जिनका डिफाइंड आंसर्स है, वेल स्टैब्लिश्ड आंसर्स है, जबकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जो फीलिंग्स बिहेवियर्स के रूप में एक्सप्रेस होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में. नाउ द कीवर्ड्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च आर टेस्टिंग, मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिविटी एंड रिप्लिकेबिलिटी. ये all terms we have already seen. Keywords for qualitative research are understanding, context, complexity and subjectivity. So with this I think हमने बहुत important points देख लिए हैं quantitative and qualitative research के. Certain these are the terms, again repetitions are only in terms of words for your own knowledge as well as the preparations for the examinations you can go through these all results. कब कहाँ qualitative research use करना चाहिए, कब कहाँ quantitative research use करना चाहिए, ये point wise you can take from here. data collection methods क्या क्या हैं. क्वांटिटेटिव डाटा के लिए सर्वेज हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, जबकि क्वालिटेटिव डाटा के लिए इंटरव्यूज हैं, फोकस ग्रुप्स हैं, एथनोग्राफी है, लिटरेचर रिव्यू है. सो दीज आर द मेथड्स. आई होप कि आपको मेथड समझ में आया होगा. पैराग्राफिक फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में भी कुछ टेबुलर फॉर्म्स मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं फॉर योर नोट्स. सो आई होप do like, share and subscribe the channel. If you like to spread it, press the bell icon to get the further notifications.